can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Ready to explore right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. Hi friends, today's ride I'm going to Bimunpadam Waterfalls, और ये जो है वरंगल के आगे है। और लास्ट टाइम जो है मैं वरंगल गया था ना, वरंगल के आगे गया था बाफाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो उस समय जो है ये भी एक्सप्लोर करके सोचा था, पर उतना टाइम नहीं मिला क्योंकि मुझे एक दिन में सिर्फ एक ही प्लेस में एक्सप्लोर करता था। और तो इसलिए मैं आज जो है भीमुनीपादम वाटरफॉल्स जा रहा हूँ। Hi friends, welcome back to my channel. And right now I'm here at Bimunpadam village, and till now I did 100 plus kilometers ride. The temperature is approximately 38 degrees over here. और जो है सो यहाँ पर ड्रिंक्स ब्रेक लूँगा, उसके बाद जो है सो यहाँ से राइड आगे राइड प्रारंभ करूँगा। Today's total ride is round trip 400 plus kilometers ride from Hyderabad to Bimunpadam Waterfalls and Bimunpadam Waterfalls to Hyderabad. रोड एकदम सीधा है और ठंडी ऊपर से वरंगल का रोड है। और मैं जो वरंगल के और आगे जा रहा हूँ, और वरंगल के और आगे जो बिमुनीपादम वाटरफॉल्स है। आई थिंक 50 से 70 किलोमीटर है वरंगल के बाद, और ऑलमोस्ट आधे घंटे प्लस किलोमीटर बाद। और एकदम काफ़ी एकदम खतरनाक गर्मी है। यहाँ से जैसे थोड़ा बहुत ऑफरोडिंग है, रोड प्रॉपर नहीं है यहाँ पर। Hi friends, right now I'm here at Bimunpadam Waterfalls, और एकदम beautiful place है, and you can see over here birds are singing over here, and very beautiful and very fascinating place and a very wonderful nature over here. Here I met a couple of subscribers over here, and they are telling hi to all of you. And have a look at the view over here, very tremendous place I can say, and this is called Bimunpadam Waterfalls. काफ़ी खूबसूरत सा प्लेस है, और चारों तरफ नेचर है। उसके अलावा जो है सो एकदम पहाड़ है, और उसके अलावा जो है जंगल है, और एकदम ये वाटर जो है सो ऊपर से आ रहा है, एकदम चट्टान से आ रहा है। एकदम काफ़ी खूबसूरत सा प्लेस है, और एकदम काफ़ी उम्दा प्लेस है।
और मैं यहाँ के लोकल लोगों को पूछा, जैसे कि अभी रेनी सीजन में और इसका फ्लो बहुत ज़्यादा होता, अभी जो समर है इस वजह से क्या है इसका फ्लो ज़रा कम है। And you can see the view over here, very beautiful place and all over greenery over here. And this is called Bimunpadam Waterfalls, Guduru, Telangana. भीमुनीपादम वाटरफॉल्स जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो भीमुनीपादम वाटरफॉल्स है और एकदम काफ़ी एकदम खूबसूरत सा प्लेस है और काफ़ी एकदम उम्दा प्लेस है। लाइक कमेंट सब्सक्राइब टू राकेश अन्ना। ओके, ये भाई लोग मिले, ये जो यहाँ के लोकल सब्सक्राइबर्स हैं मेरे गुडुरु के, और एकदम अच्छे लोग हैं। ये लोग के साथ मिला और ये लोग जो है मुझे कुछ प्लेसेस बताए यहाँ पर, उसके जो है उसके अलावा जो है यहाँ पर घूमा, एंजॉय करा। आई एम नाउ फ्रॉम हियर, आई एम गोइंग टू हैदराबाद। बाय। एकदम काफ़ी एकदम खूबसूरत सा प्लेस है, वेरी पीसफुल प्लेस। right now we are at Metro Road और वीडियो से बेसिकली मैंने बादाम में किया और यू कैन सी द बाइक ओवर हियर एंड नाउ फ्रॉम हियर आई एम गोइंग टू हैदराबाद। Our friends is on the 300 plus kilometers ride and more 100 plus kilometers remaining for today's ride.